चलो, गुड मॉर्निंग. So those who are present, जो live है, just check the audio. We start the sharing. Screen share भी start करता हूँ. Just wait. चलो, so those are present live है YouTube पे. Just use a comment section and write a comment कि the audio and the screen is visible or not. Okay. Sure. So immediately we'll wait for a few minutes so others can join and then we'll start the chapter. Okay. So today we'll try to complete the chapter. Okay? आज complete ही करेंगे. आज के lecture में नहीं हुआ तो we'll take one more lecture at evening and we'll complete this topic. Okay. Sure. So immediately just join the lecture. So we'll start. Okay. Sure. कुछ भी डाउट होगा you can ask in the comment section. So कितने students हैं? Let's check. Just give me 1 moment so I can check how many students are joined. So let's take Kungun presented. Krishna is there, Nihar there, Mandar, and Tanishka. Okay, this 3 students are there. Sure. So wait for 1 minute. At 9:05 we'll start. Okay. So this topic is very important. तुमने क्या क्या डिस्कस किया था वो फिर से डिस्कस करेंगे. And we'll start with the lecture. Okay. ये topic is very important because इसमें 50% theory आने वाला है, 50% numerical आने वाला है. This topic is very important. तो याद रखो. 50% weightage goes to the sums and 50% weightage is merely go to the theoretical part. तो इसका theoretical part भी बहुत बड़ा है. लेकिन 12 पेजेस से बैक टू बैक काउंट करके तो इफ यू स्टडी वेल ना कुछ भी नहीं इसमें तो आधा से ज्यादा बेसिक डेफिनेशन से कितने नहीं. चलो जरा हम लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था. ये टुडेस लेक्चर इज आई थिंक थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट. सो इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि व्हाट आर द डेफिनेशंस. ये डेफिनेशंस क्या क्या होते हैं इसमें. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेन, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी, ये सब पॉइंट देखे थे. उसके बाद हमने क्या देखा था. उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज द मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, दोनों में क्या डिफरेंस है. ये बेसिक हमने डिफरेंस देखा था. ठीक है. एंड उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज दी पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट एंड सीरीज मैग्नेटिक सर्किट. ये दो पॉइंट भी देखे. सो एक बार देख लेते हैं. सो हमने क्या क्या देखा था. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, देन उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेन, परमेबिलिटी. एंड हमने देखा था तीनों पार्ट देखे थे. म्यू, म्यू आर, म्यू नॉट. इलेक्ट्रॉन्स देखा था, इन दोनों का डिफरेंस मैग्नेटिक सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट का. देन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट ये भी देखा था. इन दोनों का डिफरेंस भी देखा था हमने. देन बीएच को कंप्लीट किया था. वेरियस लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, लेंज लॉ. तो टुडे विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, इट इज द फ्लेमिंग राइट हैंड. तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड. चलो लेट्स फोकस ऑन फ्लेमिंग राइट हैंड. तो फर्स्ट आई विल रीड द सेंटेंस. ठीक, उसके बाद देखते क्या दिया उसने. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. लेट्स रीड द सेंटेंस फर्स्ट. तो क्या दिया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में कि इट इज यूज्ड टू गेट अ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे क्या दिया. इट इज यूज्ड टू गेट अ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा, कंडक्टर मतलब कोई भी एक मेटल. So when conductor is moving in a magnetic field, तो क्या चेंज होगा. चेंज इन फ्लक्स. फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देयर इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये कौन सा लॉ बताता है. फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. श्योर, ये उसने बताया
It is used to get the direction of induced EMF when conductor is moving in a magnetic. तो जो induce यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, राइट है, लेफ्ट है, 190 डिग्री, 45 डिग्री, क्या है? We need to check the direction of induced EMF. And that's why we are using this Fleming right hand. क्या स्टेटमेंट है? According to it, outstretch 3 fingers of the right hand. तो राइट हैंड का 3 fingers outstretch करो, 3 fingers उसको निकालना, नेमली द थंब, 4 finger and middle finger. तो ये 3 finger आपको निकालना, थंब, 4 finger and middle finger. So राइट हैंड में से 3 finger यूज करें, थंब, 4 finger and also middle finger, so that each one is a perpendicular to each other. तो ऐसे उनको अरेंज करना है कि तीनों fingers are perpendicular to each other. तीनों में क्या एंगल आना चाहिए, 90 डिग्री. Arrange the right hand so that the first finger is in the direction of flux line, not to south. Thumb in the direction of motion of conductor with respect to flux, and middle finger will point direction of induced EMF. तो ऐसे अरेंज करना है कि thumb, 4 finger and middle finger, it will indicate one of the direction. क्या डायरेक्शन? नीचे डायग्राम दिए. तो देखो यहाँ पे बीच में कंडक्टर दिया हमने, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ. तो नीचे उन्होंने कंडक्टर दिया, डिफरेंट कलर, ये कंडक्टर, एक रॉड उन्होंने दिया, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज वन ऑफ द मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे दिया, दिस इज वन ऑफ द मैग्नेट, उसका साउथ पोल यहाँ. सो नाउ नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो है आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ. तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो है, तो फाई चेंज होगा. जब फाई चेंज होगा, बिकॉज ये मोशन में, दिस कंडक्टर इज इन मोशन, यहाँ पे मोशन देखो कैसा है, ऊपर नीचे से मोशन. Whenever there is a motion, the magnetic flux is change. उसके वजह से there is an induced EMF in the circuit. उस induced EMF का डायरेक्शन क्या है, तो कैसे होगा, लेट्स. तो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड में 3 फिंगर मैंने सिलेक्ट किए, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर. मैंने 3 ही सिलेक्ट किए, थंब, मिडिल फिंगर एंड 4 फिंगर. तो ऊपर स्टेटमेंट क्या दिया है, थंब शुड इंडिकेट मोशन ऑफ कंडक्टर. ये कंडक्टर का मोशन क्या है, दैट इज अपवर्ड ना, अपवर्ड इंडिकेट करेगा थंब फिंगर, थंब ऊपर आना चाहिए. उसके बाद ये 4 फिंगर क्या यूज करेगा, टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब कैसे जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. तो लेफ्ट साइड में आपका 4 फिंगर होना चाहिए, हुआ, यस. वो छोड़ने के बाद व्हाट इज द लास्ट वन, ये परपेंडिकुलर बनाना है, ये डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे. तो दिस विल, द मिडिल फिंगर विल शो यू डायरेक्शन ऑफ EMF. Direction you have to show the current also. Short. So thumb finger will be motion, 4 finger is direction of flux, and middle finger will show the direction of EMF. समझ आ गया? वही उसने बताया कि अगर आपको 2 डायरेक्शन पता है, सबसे पहले राइट हैंड सेलेक्ट करना है. राइट हैंड में all fingers should be perpendicular to each other. राइट हैंड 3 fingers all are perpendicular to each other. ये दोनों एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन. ये मोशन का है, ये फ्लक्स का है, आपको लास्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा. That is the direction of EMF. No need to find, automatically will check. Okay, sure. So let's start with the next one. So this is a Fleming right hand rule. So उन्होंने क्या mention किया था? Why we use a Fleming's right hand rule to get the direction of induced EMF by using Fleming's right hand rule. Sure. Any doubt, anyone? So this is the right hand. We will select 3 fingers. तो 3 fingers select करना है, thumb, 4 and middle. तीनों को arrange करना है in a perpendicular manner. एक बार perpendicular manner arrange हुआ, then the right hand will indicate your direction of flux. Okay, then the 4 finger will indicate the direction of क्या, that is a flux, and the next one will indicate the direction of the induced EMF. The thumb, 4 and middle, direction of the conductor or the motion of the conductor, direction of the flux, and the middle finger will indicate the direction of induced EMF. एग्जाम में आ सकते हैं कि स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल विद अ नीट डायग्राम. So you need to write this both the statements. This is the actual law. This is actual law. So you need to just write these 2 sentences and then draw both the diagram. ये hand का diagram practice. So practice more and more for this hand का diagram. This one. ये तो easy है. You can draw it very easily. इसका practice करो because it should be look like a hand. तो हाथ में जैसे दिखना चाहिए. Okay, do not draw any shape. Just draw it very properly. So it will be visible as a hand, and it should be right hand. Okay, make sure it should be right hand. Left hand निकालो मत, because this principle is based on right hand.
So next one we'll start with it is a dynamically induced EMF. There is a two induced EMF. तो जो induced EMF होगा that will be categorized into dynamically and statically. तो सबसे पहले देखते हैं कि what is a dynamical. So what is the definition? यहाँ पे definition mention किया कि due to the relative motion between the coil and magnetic field. Due to the relative motion between the coil and magnetic field, the EMF which is induced in the coil is called dynamical. तो ऊपर डायग्राम फिर से देखो कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है और मेरे पास एक कॉइल और वी कैन से कंडक्टर. इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है. सो राइट नाउ दिस मैग्नेट, बोथ मैग्नेट आर स्टेबल. लेकिन किसका मोशन हो रहा है? दिस कंडक्टर का. एंड ड्यू टू द मोशन ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. सो व्हेनेवर देयर इज अ मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंडक्टर, उसके मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है दैट इज नोन एज डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो कुछ ना कुछ मोशन होना चाहिए. तो यहाँ पे मोशन किसका हुआ? कंडक्टर का. ये कंडक्टर ऊपर नीचे जाने वाला है. And due to this motion, there is a change in magnetic flux. Then there is an induce of EMF. तो सेम उन्होंने यहाँ पे नीचे डेफिनेशन है कि due to the relative motion between the coil and magnetic field. यहाँ पे coil और conductor you can take any example. So due to the relative motion between the coil and magnetic field, the EMF is induced in the coil. That is known as dynamically induced EMF. तो मोशन की वजह से अगर EMF इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, that is known as dynamically induced EMF. ठीक है? So anyone any doubt? So एक बार ये भी देख लो, right hand rule, flaming right hand rule. Okay, so छोटा करता हूँ screen so you can visible all the things in a one. Just थोड़ा अपोर शिफ्ट करते हैं और थोड़ा छोटा. So I make it 80. ठीक है? Sure. So go through this flaming right hand rule and then we'll start with the dynamically induced. So definition लिखा है. We'll see the next part. Just go through the flaming right hand rule. Just go through both the point and diagram. If you have any doubt, you can ask me. Else, in the chat box, you can write flaming right hand rule is clear. Okay? Sure. So if you have any doubt, कुछ भी doubt होगा, use the comment section and write that down. Else, you can write flaming right hand rule is clear. ठीक है? चलो immediately. So those who are present, only they will get attendance. तो जो present है उनको attendance मिलने वाला है. They should be active in the chat box. सिर्फ लगा के भाग गए, there is no use. So those who are present, only they will get the attendance. तो क्या लिखना है chat box में? Fleming right hand rule is clear. चलो immediately. कुछ doubt होगा, you can ask me. चलो. So we have Krishna, Meher, Mandar, Tanishka, Amaya, Ayush, Vaishali, Karam. So Vaishali लिखा है, Fleming right hand rule is clear. Good. कृष्णा ने लिखा है, आयुष ऑल्सो देयर. तो जो लोग लिखने वाले only they'll get attendance. Okay? And कुछ भी डाउट होगा तो you can use a comment section. चलो. So तीन ही लोग प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे तो 8 दिख रहे. टोटल तो 50 स्टूडेंट्स है. बाकी सब कहाँ पे भाग गए? क्या संडे एंजॉय? चलो. मंदारी ऑल्सो देयर. So let's start with the next one. So dynamically हमने देखा है, उसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. So dynamically induced EMF क्या होता है? Due to the motion between the coil, or we can say conductor, and magnetic field, there is a EMF generation. That EMF generation is known as a dynamic. Okay, sure. So diagram देखते हैं एक बार और एक उसका diagram पीछे. This is diagram. थोड़ा ऊपर और शिफ्ट करते हैं. Sure. So this is a dynamically induced EMF का diagram. Okay. So this is your diagram. देखो ये diagram में क्या दिया है? ऊपर north pole है, this is north pole, and this is south pole. इनके बीच में conductor, or we can say any coil. So this is one of the conductor. ये ऐसे cross किया, this is one of the conductor. And this conductor is moving with a velocity. तो यहाँ पे किसका motion हो रहा है? Conductor का. चलेगा? दोनों में से एक motion में, दोनों motion में कुछ problem नहीं. लेकिन motion होना चाहिए. There should be a motion. So there is a motion of this conductor with a velocity v, and north to south there is a magnetic lines of force. So due to the relative motion, यहाँ पे क्या होगा? Magnetic flux change होगा,
magnetic flux change होने की वजह से there is a production of EMF, induced EMF. That EMF is known as dynamically induced EMF. Okay, so this is your direction. Now due to ये तो normal जा रहा है, conductor is moving with the velocity v, but due to the magnetic field इसके ऊपर थोड़ा सा force apply होगा, and due to the force conductor will change the direction. See आप straight line जा रहे हो on the road, लेकिन सामने से कोई आ गया, आपको force किया उसने, उसको धक्का दिया, so you'll change your direction थोड़ा change होगा, same यहाँ पे होगा. So whenever the conductor is moving with the velocity v, a magnetic field is applied, तो कंडक्टर का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ. तो कितने से चेंज हुआ? सीधे से. अर्लियर द डायरेक्शन दिस वन टुवर्ड्स द राइट साइड प्रोग्राम, एंड ड्यू टू द फोर्स थोड़ा सा चेंज होगा. बाय हाउ मेनी एंगल? बाय एंगल थीटा. कितने से चेंज हुआ? थीटा. तो ये थीटा को हमने रिजॉल्व किया. दिस इज द एंगल, दिस इज द v, दिस इज एंगल थीटा. सो दिस विल बिकम v cos थीटा एंड v sin थीटा. यहां पे मैंने अच्छे से निकाला. सो आपका v यहां पे थोड़ा चेंज हुआ डायरेक्शन से. So this is angle theta. So theta के साथ जो कुछ लाइन है, this is cos theta. Without theta, that is a sin theta. ये आपको पता होना चाहिए. 9th-10th स्टैंडर्ड में क्या था? How to resolve the force को ऐसे रिजॉल्व कर. तो अगर ये मेरा फोर्स का लाइन, this is angle theta. तो ये हो गया cos का पार्ट, ये होगा sin का पार्ट. So what is your EMF? What is the formula of EMF? So the induced EMF is E is equal to BLV sin phi. क्या है? BLV sin pi. तो देखते क्या क्या टर्म. Each dynamically induced EMF. E क्या होता है? That is a dynamically induced EMF. What is B? B is a magnetic flux density. ये magnetic field का कितना density? Flux density. That is B. L is a length of the conductor. जो conductor use किया, उसका length कितना? Then velocity of that conductor. And this is phi ना? This is magnetic flux. नहीं, this will be angle theta. यहाँ पे जो phi है ना, it should be, you can write theta. Write your theta. Phi नहीं, it's a theta. There is a typing mistake. So this is theta. तो formula क्या change होंगे? So this will be a sin theta. This is sin theta. So I'll write once again. E is equal to BLV sin theta. And this theta indicate कितने एंगल से ये चेंज हुआ, कितने एंगल से बेंड हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ. So this angle theta is here. So what is E? It's a BLV sin theta. So B is magnetic flux density. L, this is L. This is the length of conductor. We can count in meter. Velocity. Sin theta. Theta क्या? There is a change in angle. So direction of dynamically induced EMF can be determined Fleming's right hand. Same. तो मुझे अगर induced EMF का direction count करना है, तो कौन से direction में जा रहा है? तो कैसे count करेंगे? By using Fleming's right hand. Thumb, forefinger, middle finger. Motion, flux, and induced EMF. ठीक है? So this is your dynamically induced EMF. तो एग्जाम में आया कि explain dynamically induced EMF, तो you should write the definition. जो ऊपर देखा था हमने definition, वो definition देखना है, इसको लिखना है. Draw this diagram and then write down this formula with this statement. एक बार go through करो, just go through it. This one. ऊपर नीचे definition भी उसको एक बार फिर से देखते हैं. So एग्जाम में आया कि what is dynamically induced EMF, you should write down this one. Let me just do the question. ठीक है, तो एग्जाम में आया तो क्या करना है? यू शुड राइट ऑल द पॉइंट्स. तो सबके हाथ में नोट्स का प्रिंट आउट होना चाहिए. पीडीएफ से पढ़ो मत, जस्ट टेक नोट्स का प्रिंट आउट और जेरॉक्स एंड यू शुड राइट इट. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो एग्जाम में पूछा व्हाट इज द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यू शुड राइट ऑल द पॉइंट. दिस डेफिनेशन, दिस डायग्राम, दिस फार्मूला, फॉर्मूला जो कुछ भी टर्म है उसका स्पेसिफिकेशन कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड द फाइनल के डायरेक्शन कैसे काउंट करते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल. And this is your theta. Make a change. This should be theta. Theta. So any doubt, anyone? Sure. Check karo. So if you have any doubt in the dynamically induced EMF, you can ask. Else in the chat box you can write dynamically induced EMF. It's clear. Okay. Sure. So anyone any doubt? So you can write in the chat box that is the dynamically induced EMF. It's clear.
वैशाली ने लिखा है, others you can also write. Those who are done, they can write कि dynamically induced EMF is clear. Else कुछ doubt होगा तो पूछो. उसके बाद we'll see the statically induced EMF क्या होगा. चलो फटाफट, 2 ही लोगों ने लिखा है अब तक. So कुछ भी डाउट होगा तो यूज चैट बॉक्स एंड जस्ट राइट. उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिक के लिए इंड्यूस EMF. तो डायनामिक देखा, ये स्टैटिक के लिए देखते हैं. Sure. So no doubt, anyone? Sure. Good. So Ayush, Mihir, Mandar, Krishna, Karan, सबने लिखा है. Good. So let's see the next one. That is the statistical. तो कंसेप्ट सेम है, लेकिन इंड्यूस EMF होने वाला है. दैट कंसेप्ट इज सेम कि यहाँ पे EMF इंड्यूस होने वाला है. सिर्फ यहाँ पे डायनामिक हुआ ड्यू टू द मोशन. एंड स्टैटिस्टिकली मतलब क्या? स्टेबल. स्टैटिस्टिकली मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, स्टेबल होगा. ओके, so let's see the statistically. What is the statistically? The EMF which is induced in the coil without relative motion between the coil and magnet. तो EMF जनरेट होगा, लेकिन यहाँ पे मोशन, there is no called motion. So whenever there is a no motion, still there is a production of induced EMF. That is called the statistically induced EMF. I am traveling from Thane to CST to do one work. मेरा काम हो गया. I am sitting at Thane. सभी मेरा काम हो गया. जब दोनों कंडीशन में मेरा काम हुआ है. एक कंडीशन में मैंने मोशन किया ठाणे टू सीएसटी, एक मोशन इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कॉल पे ही काम हो गया, खत्म. तो अगर मुझे कुछ नोट्स चाहिए, मैं कॉलेज में गया एंड नोट्स ले लिया, तो मैं कॉलेज जाके नोट्स लिया, दैट इज अ मोशन. मैंने सिर्फ कॉल किया एंड फ्रेंड ने मुझे पीडीएफ सेंड किया, मैंने उसका घर पे बैठ के प्रिंट आउट किया, तो खत्म, घर पे बैठ के काम हो गया. सो इन बोथ कंडीशन काम तो कंप्लीट हुआ, लेकिन फर्स्ट केस में मोशन हुआ, सेकंड केस में मोशन नहीं हुआ. से डायनामिकली इंड्यूस्ड EMF में देयर इज अ मोशन and the output is induced EMF. Statistically induced EMF में there is no motion, still the output is stable. Okay, दोनों cases are different, but out and the output is same. Value different हुआ, but the quantity is the same. That is induced EMF. So the EMF which is induced in the coil without relative motion between the coil and magnetic field is called statistically induced. तो यहाँ पे motion नहीं होगा. Same definition है, only यहाँ पे with relative motion होगा, यहाँ पे without relative motion. There is कोई यहाँ पे rotate नहीं होगा. Both are stable. Coil and magnetic field अपने जगह पे खड़े, so they will not do any motion. The statistically induced EMF का दो types, there's a two classification. So what are the two main type? Self-induced EMF. तो क्या होता है self-induced EMF? It is a EMF induced in the coil due to the change of flux produced by linking it with own turns. EMF induced होगा coil में due to the change of flux produced by linking with its own turns. तो यहाँ पे देखते क्या है, मतलब डायग्राम को स्टडी करते हैं, then we get the idea. तो यहाँ पे कंडक्टर, दिस इज माय कंडक्टर, तो ये मेरा कंडक्टर, ठीक है. ये कंडक्टर के ऊपर मैंने ऐसे वायर बाउंड किया, ये मैंने ऐसे वायर बाउंड किया, कितने टर्न से मुझे पता नहीं, इट्स n, एंड फ्रॉम दिस वायर देयर इज अ करंट इज फ्लोइंग. यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है क्या? एक्स्ट्रा मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं. यहाँ पे नॉर्थ पोल, जैसे प्रीवियस डायग्राम में था कि वहां पे एक नॉर्थ पोल था, नीचे साउथ पोल था, यहाँ पे एक कंडक्टर था, एक मोशन.
तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ भी नहीं, वी हैव वन कंडक्टर, उसके ऊपर वायर ऐसे बाउंड किया है, करंट इज फ्लोइंग एंड ड्यू टू द करंट इज फ्लोइंग देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंडक्टर ही एक्ट करेगा मैग्नेट, कंडक्टर विल एक्ट एज अ मैग्नेट जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक। सो दिस कंडक्टर विल एक्ट एज अ मैग्नेट, फ्रॉम द मैग्नेट देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कंडक्टर विल एक्ट एज अ मैग्नेट, दिस मैग्नेट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। जब करंट ऊपर नीचे होगा, करंट चेंज होगा ना, तो व्हेनेवर देयर इज अ करंट चेंज इन करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। करंट चेंज होगा मतलब वोल्टेज चेंज होगा, सो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दिस विल इंड्यूस ईएमएफ। अब यहाँ पे विदाउट मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट नहीं है ना, सो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, but that to the self, it is in EMF induced in the coil due to the change of magnetic flux produced by linking with its own turns। खुद के टर्न से उसने प्रोड्यूस किया, खुद के ऊपर वायर बाउंड करके उसने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, कोई दूसरा मैग्नेट उसने यूज नहीं किया। सो दैट इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, without taking other self, without taking any help of other magnet, the system is producing EMF, that is known as self induced EMF। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ किसका टाइप है, स्टैटिस्टिकली, बिकॉज यहाँ पे किसी का मोशन नहीं हुआ, कंडक्टर इज स्टेबल, ओके। एंड सेल्फ क्यों है, बिकॉज यहाँ पे एक भी मैग्नेट नहीं, अदर ऑब्जेक्ट नहीं, अदर मटेरियल नहीं, सो ये वायर बाउंड करके वी गेट द आंसर। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय लिंकिंग इट विद ओन टर्न्स। यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेट नहीं, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके किसी दूसरे का हेल्प भी है यहाँ पे नहीं ना, तो आई एम सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया, मैं खुद से किया कंप्लीट, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। सो लेट्स सी द फार्मूला। इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल टू L डी अपॉन dt। सो E इज इक्वल टू L डी अपॉन dt, ओके। यहाँ पे L क्या होगा, दिस L इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये जो कंडक्टर है इसका इंडक्टेंस क्या होगा, जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है, सेम कंडक्टर का क्या होगा, दैट इज इंडक्टर्स। तो वी कैन से इंडक्टर का क्या होगा, इंडक्टेंस। तो ये जो कॉइल है, ये जो कंडक्टर है, इसका क्या होगा, इंडक्टेंस, इट विल गिव द इंडक्टेंस, दिस कॉइल का इज इंडक्टेंस। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ईएमएफ, E is equal to L di upon dt, because there is a change in current na, so this is the rate of current with respect to time। so let's see some point नीचे और क्या दिया है, नीचे उन्होंने दिया what is L, L is known as the self inductance। why it's a self, because it's connected with self induced। so inductance क्या होगा, self। तो कैसे काउंट करते हैं इंडक्टेंस, इन हियर हेनरी, फैरेड में तो कैपेसिटर काउंट करते हैं। सो एक बार फिर से देखते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिकली एंड व्हाट इज द सेल्फ इंड्यूसिंग। इसको और छोटा करते हैं, 99 है, इसको 70 करते हैं, ठीक। लेट्स ट्राई फॉर 75। सो स्टैटिस्टिकली इंड्यूस ईएमएफ मैंने बताया कि क्या होता है कि देयर इज नो कॉल्ड मोशन, यहाँ पे मोशन नहीं होता। दो टाइप है उसमें, फर्स्ट टाइप है सेल्फ इंड्यूस। सेल्फ इंड्यूस मतलब अकेला, इंडिविजुअली इट प्रोड्यूसिंग द ईएमएफ, तो विद ओन टर्न्स। दिस इज अ फार्मूला, L is known as self inductance, that is in here, just go through it, okay। कुछ भी डाउट अगर पूछो L से में चैट बॉक्स में लगाइए, क्या लिखना है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्लियर, क्योंकि अभी सिर्फ सेल्फ हुआ, म्यूचुअल बाकी, स्टैटिस्टिकल का सेकंड टाइप बाकी, एक ही हुआ ना। तो जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्लियर, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दैट इज द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। चलो फटाफट, सो इफ यू हैव रीड आउट देन आस्क। तो चैट बॉक्स में क्या लिखना है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज क्लियर। ऐसे कुछ डाउट अगर तो पूछो, चलो फटाफट। So this is our fourth lecture of module 1। चलो फास्ट, चलो। सो वैशाली ने लिखा है, मेहर, रचित, रोहित, तुषार और
बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? चलो जल्दी, तो कृष्ण also there. चलो good. So let's start with the next one. Self inducing हो गया. Let's go for the mutual. Just look at. Sure. So next one is a mutually induced email. So mutually induced EMF क्या है? It is an EMF induced in the coil due to change of flux produced by another neighboring coil linking with it. मतलब क्या? मेरे पास एक कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर, लेट्स टेक दिस वन, दिस इज A ना, दिस इज योर फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज योर B, दिस इज योर सेकंड कंडक्टर. तो मेरा कंडक्टर 1, दिस इज माय कंडक्टर 1. फ्रॉम द कंडक्टर 1 यहाँ पे मैंने कॉइल्स इसे बाउंड किया, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N. सो कंडक्टर A, दिस इज कंडक्टर A, नंबर ऑफ टर्न्स इज N1, दिस इज कंडक्टर B, नंबर ऑफ टर्न्स इज N. श्योर. अभी मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे सेकेंड, इसमें मैंने एक सप्लाई दिया, यहाँ सप्लाई एंड रेओस्टैट स्विच सब कनेक्ट किया. रेओस्टैट क्या होता है आपके सिलेबस में नहीं. रेओस्टैट मतलब यू कैन चेंज द रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो. यहाँ पे स्विच लगा है, वो ऑन ऑफ द सर्किट, यहाँ पे बैटरी लगा है. मतलब करंट कहाँ से फ्लो होगा? फर्स्ट में से कि सेकंड में से? सेकंड में से, बिकॉज यहाँ पे सप्लाई दिया ना मैंने, यहाँ पे मैंने एक सप्लाई दिया. दैट्स व्हाई करंट कहाँ से फ्लो होगा? इन सेकंड सर्किट. तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, एंड करंट फ्लो होने की वजह से देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा. देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा. श्योर. नाउ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स विल आल्सो एक्ट ऑन द फर्स्ट कॉइल. यहाँ पे भी एक्ट होंगे बिकॉज दिस आल्सो मेटल, ये भी एक मेटल है. तो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्ट ऑन द फर्स्ट सर्किट, एंड जब मैग्नेटिक फोर्स फर्स्ट सर्किट पे एक्ट होंगे, there is also production of some amount of the voltage here. तो यहाँ तो वोल्टेज EMF इंड्यूस होगा ही, लेकिन इसका इफेक्ट सेकेंड मेटल पे भी होगा. इसका इफेक्ट मतलब जो फर्स्ट वाला है उसके ऊपर भी होगा. तो अर्लियर डायग्राम में क्या था? मेरे पास एक ही सर्किट था, ये वाला, खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया एंड इंड्यूस EMF किया. अभी क्या होगा कि दिस मैग्नेट, दिस सर्किट विल जनरेट EMF, इसका इफेक्ट सेकेंड वाले पे होगा. And that's why here also EMF induced होता है. So effect of the one of the circuit is on the other. And that is known as a mutually induced EMF. आप लोग क्या करते हो? कुछ टिफिन लाए तो क्या अकेले खाते हैं? नहीं ना, किसी ने लाया ना तो उसके साथ शेयर करते हैं. सेम इसने कुछ EMF इंड्यूस किया, जो बाजू वाला है उसके साथ शेयर किया. That is known as a mutually induced. Mutual उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन हुआ. It is a EMF induced in a coil due to change of flux produced by another neighboring coil linking it. यहाँ पे जो फ्लक्स है उसके साथ, and that's why there is a mutual inducing. बेसिक कंसेप्ट इतना ही याद रखो. सो फॉर द कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर B, इसने जो कुछ भी जनरेट किया है फ्लक्स यहाँ पे शेयर होगा. दिस कॉइल विल आल्सो इंड्यूस EMF and will count here by voltage. यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? E is equal to M dI1 upon dt. dI1 upon dt. So what is M here? M is not the mutual inductance. वहाँ पे L था ना, L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस. यहाँ पे M क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस. फॉर्मूला सेम, वहाँ पे L था, यहाँ पे M. वहाँ पे सिर्फ d अपॉन dt था. यहाँ पे दो सर्किट है. EMF ये कहाँ पे जनरेट हुआ? एट द फर्स्ट वन ना,
यहाँ पे इफेक्ट हुआ ना, इससे di1 upon dt सॉल्व जाना, so it's E is equal to m di upon dt. So we'll use this formula. E is equal to m di1 upon dt. Sure, any doubt? तो EMF कहाँ पे जनरेट हुआ? सेकंड सर्किट. So we will take this one. कि फर्स्ट सर्किट का इफेक्ट सेकंड सर्किट पे हुआ. तो EMF कहाँ पे जनरेट हुआ? सेकंड में, ड्यू टू द करंट फ्लोइंग ऑफ फर्स्ट वन. तो फर्स्ट सर्किट में करंट फ्लो हुआ, इसकी वजह से सेकंड सर्किट पे EMF जनरेट. सो E2 कहाँ पे? ये I1 कहाँ पे? यहाँ पे. सो व्हाट इज द फार्मूला? E2 is equal to m di1 upon dt. फर्स्ट सर्किट में करंट फ्लो हुआ, इसकी वजह से देयर इज अ EMF इन द सेकंड सर्किट, दैट इज नॉट म्यूचुअल. यहाँ पे m लिखा मतलब म्यूचुअल. यहाँ पे उन्होंने नीचे दिया भी कि व्हाट इज m. जस्ट नीचे उन्होंने दिया है व्हाट इज m. m is a mutually inductance, mutual inductance, and same it's a Henry. So what is the definition? Mutually induced EMF. It is an EMF induced in a coil due to change of flux produced by the another neighboring coil linking with it. तो फर्स्ट सर्किट का इफेक्ट सेकंड पे हुआ, इसमें जो कुछ भी करंट प्रोड्यूस हुआ उसका इफेक्ट EMF पे. सो इट्स E2, यहाँ पे E2 लिखो. सो यू कैन राइट E2 is equal to m di1 upon dt. ठीक है, sure. So just go through it. If you have any doubt, you can ask. Else in the chat box you can write mutual induced EMF is here. Else specify any doubt, we'll discuss. Okay, इसको एक और बार रिवाइज करें. It's also revise. So कुछ भी डाउट है anyone? So क्या लिखना है? E2. Okay, make a change. आपके नोट्स में चेंज करो. It's E2. E2 मतलब सेकंड सर्किट पे EMF इंड्यूस हो, वही काउंट करेंगे, फर्स्ट का नहीं काउंट करेंगे. So E2 is equal to m di1 upon dt. चलो, any doubt anyone? चलो जल्दी फटाफट सीट. चलो, any doubt anyone? Sure. तो उसके बाद we'll see the last question and then we'll stop. Okay, उसका last question देखो and then we'll stop. Sure. So last question थोड़ा सा difficult है. I'll give the concept. Okay, तो इतना पूरा डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं, because it's a bigger concept, hysteresis. First we'll see the definition and diagram, and उसके बाद नीचे लिखो. चलो. So let's see the next concept, that is known as the hysteresis. So what is the hysteresis? Let's see. It is a phenomenon of falling back of flux density while demagnetizing cycle. So दो चीजें होती है लाइफ में, that is a magnetization and demagnetization. Magnetization क्या होता है कि one of the conductor become magnet. Slowly उसके अंदर magnetic property increase, magnetic field increase होगा. That is called the magnetization. Demagnetization क्या होगा कि slowly उसका magnetic power decreases. That is called the demagnetization. It is a phenomenon of falling back of flux density. In terms क्या count करें? That is a B. So उसका B initially बढ़ रहा है and then कम हो रहा है. So whenever it's increasing magnetic flux density, that is called the magnetization cycle. And whenever the flux is decreasing, that is called the demagnetization cycle. So it's like motivation, मतलब आपका अंदर motivation बढ़ रहा है. Demotivation मतलब motivation down है. Same. Magnetization मतलब उसका B increase होगा, demagnetization मतलब decrease होगा.
So it is a phenomenon of falling back of flux density while demagnetization cycle. तो एग्जाम पूछा तो you should get this diagram. Okay, so let's see this diagram. Now ये diagram में we have B and H. क्या है? H on the x-axis, B on the y-axis. H क्या है? Magnetic field strength. B is a flux density. Magnetic flux density. अगर आपने ये देखा उसके अंदर, ये तो BH का, this is total BH का. जो हमने initially देखा था, what is BH का? Initially थोड़ा बढ़ेगा, then B increase होगा immediately, and then B become saturated. यहाँ पे B saturated होगा. उसके बाद क्या होगा? एक बार saturation point आने के बाद क्या होगा? So BH का में हमने कहाँ तक stop किया था? Saturation point तक. कि the magnetic flux density saturation point तक stop होगा. उसके आगे क्या होने वाला है? Let's see. So after the saturation point, the current is again reduced to zero. After the saturation point, the current is again reduced to zero. तो यहाँ से जाने के बाद current again zero होगा. एक बार saturation point आने के बाद, the current again reduced to zero. तो जहाँ तक current बढ़ा था, वहाँ से again fall back होगा और zero होते जाएगा. And due to this, the field strength also reduces. तो current अगर zero हो रहा है, तो आपका ताकत भी कम होगा ना, supply आपका कम होगा, तो आपका intensity कम होती जाएगी. So due to this, the field strength also reduces to zero. But it's observed that the flux density does not trace a same curve. तो इसका मतलब saturation point आने के बाद current reduce होगा, तो मतलब उसने again zero तक जाना चाहिए, तो zero जाएगा वो, but same path पे नहीं जाएगा. जो path उसने increase होते टाइम follow किया था, same path decrease होते टाइम नहीं जाएगा. मतलब initially B ऐसे increase होगा, लेकिन जब वो decrease होगा, same path follow नहीं करेगा. Path will be different. तो कैसे path follow करेगा? ये पाथ फॉलो करें. ऐसे शेप इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे दिया इनिशियली इंक्रीज होते टाइम ऐसे पाथ फॉलो करें. दिस वन. सो व्हाइल डिक्रीजिंग इट विल फॉलो दिस पाथ, एंड व्हाइल डिक्रीजिंग इट विल फॉलो दिस पाथ. ऐसे डिक्रीज हो, देन अगेन इंक्रीज हो. तो दिस इज टू द हाइस्टेक्सिस. इस सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद करंट रिड्यूस होगा, फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा, मतलब H, बट फ्लक्स डेंसिटी सेम पाथ पे डिक्रीज नहीं. The fall back as compared to previous magnetic cycle. जैसे increase हुआ उस हिसाब से decrease नहीं. It will follow this path. It will get increase, then it will go back. It will go back, and again it will increase. ठीक है? Exam में they'll ask you what is the hysteresis. क्या क्या लिखना है? You should get this definition. You should get this definition. What is the hysteresis? It is a phenomenon of falling back flux density while demagnetization. And then write down this one. ऐसे क्यों हो रहा है? Because the B will not follow same path. It is observed that flux density do not follow the same curve, and that's why we get this curve. ये S shape का जो curve है ना, ये आता है. So practice for this diagram. So practice more and more for this diagram. Okay. So practice more for this diagram. इसके ऊपर जो point है we'll see in the next lecture. ये थोड़ा deep में. I'll just introduce in this topic. ये थोड़ा सा deep. So what I'm just trying to show you this introduction part. कि hysteresis क्या होता है? कि whenever there is a demagnetization cycle start, the जो curve आने वाला है, that curve is called as hysteresis. तो इससे decrease हो रहा है, again increase हो रहा है, तो this is called as hysteresis. तो ये तो क्या है? That is a BH का. Then next one, we'll see this part in the next lecture. ये parts of next lecture में study करें. तो इसे थोड़ा difficult, deep में जाओ. So there is one more concept कि hysteresis loss क्या? So what is the hysteresis loss? So the definition is the loss of energy appears in the heat in the magnetic material is known as hysteresis loss. ये basically आपको कहाँ से लिखना है? यहाँ से. When the magnetic material is subject to repeated cycle of magnetization demagnetization, it will result into the disturbance in the alignment of the various domain. The energy gets stored when the magnetic field is established, and energy is returned in the collapse. Due to hysteresis, all energy is never returned to the field completely collapse. Loss of energy appears in the magnetic field. मतलब क्या होगा? जब करंट इंक्रीज होगा तब B बढ़ेगा, जब करंट डिक्रीज होगा तब B डिक्रीज होगा. जब B इंक्रीज होगा, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. जब B रिड्यूस होगा तब एनर्जी डिक्रीज. लेकिन जितना एनर्जी बढ़ा है उतना एनर्जी डाउन होगा, पता नहीं. सो बोथ आर नॉट सेम. तो मतलब सेम एनर्जी कैरी फॉरवर्ड नहीं है जब इंक्रीज होता है, जब डिक्रीज होता है. तो देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी.
So during the cycle of magnetization and demagnetization cycle, there is a loss of energy. Okay, and ये loss क्यों होता है? Due to hysteresis. All energy never return to the field completely. This loss of energy is known as a hysteresis loss. तो hysteresis loss क्या होता है? During the magnetization and demagnetization cycle, there is a loss of some amount of energy in terms of heat. That is known as the hysteresis loss. Okay, यहाँ पे दिया it may cause a temperature rise due to the heat produced and reduce overheat heats. तो heat develop हुआ मतलब क्या हुआ कि temperature बढ़ा हुआ सिस्टम का and then it will decrease the efficiency. Output input ratio कम होगा. ठीक है, तो एग्जाम में क्या लिखना है? For the hysteresis law you should get this 3 point. कि रिपीटेड साइकिल होता है मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का, जितना एनर्जी जनरेट हुआ उतना प्रोड्यूस, उतना अगेन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कुछ ना कुछ लॉस हो. तो अगर आपके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसे कॉइन्स दिए हाथ भर भर के एंड आपको बोला कि ये पोजीशन से वो पोजीशन पे जाना, तो सेम कॉइन वहां पे जाएंगे नहीं, बीच में 2-3 कॉइन नीचे गिर जाएंगे, अगेन यहाँ से वहां जाना तो और 2-3 कॉइन गिर जाएंगे. सेम ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट लॉस, गायब हो जाती है. कहाँ पे? इन टर्म्स ऑफ हीट, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, दैट इज नोन एज hysteresis loss. इसके वजह से क्या होता है? एफिशिएंसी डिक्रीज. शॉर्ट, एनी डाउट एनीवन? सो दिस इज द hysteresis loss. तो एग्जाम में व्हाट इज hysteresis पूछा तो क्या लिखना है? डेफिनेशन एंड द डायग्राम. ठीक है, सो hysteresis पूछा तो क्या लिखना है? दिस टू डेफिनेशन, दिस पॉइंट एंड दिस डायग्राम. फिर hysteresis loss पूछा तो क्या लिखना है? दिस वन. यहाँ से स्टार्ट करें. तो hysteresis क्या होता है? There is a cycle of magnetization demagnetization. उसका जो साइकिल दैट इज नोन एज hysteresis loop. Hysteresis loss क्या होता है? During this cycle there is a loss of energy that is known as the hysteresis loss. In terms of क्या होता है? Heat, temperature increase, temperature rise. ठीक है? So any doubt in the hysteresis term? So exam में कुछ भी पूछ सकते हैं, hysteresis और hysteresis loss. ठीक है? So you should write this point. Diagram का practice करो. Diagram you will have 2 marks for the diagram. तो 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो उसमें 2 मार्क तो डायग्राम के ऊपर है, 1 मार्क डेफिनेशन, 1 मार्क कुछ और पॉइंट एंड 2 मार्क फॉर दिस डायग्राम. तो प्रैक्टिस मोर फॉर दिस डायग्राम, मोर एंड मोर. तो 2-3 बार देख के प्रैक्टिस करो एंड उसके बाद ट्राई टू रिमेंबर क्या क्या आपने ड्रॉ किया. यहाँ पे सैचुरेशन, तो यहाँ पे सैचुरेशन. So just go through the hysteresis and to draw this point. Okay, ये सब ड्रॉ करें. So any doubt in the hysteresis, the basic concept में से आपको पढ़ा. उसके steps क्या will take in the next lecture because बहुत deeply it will take 15-20 minutes to understand कि O to D कैसे गया, उसके बाद D to E, E to F, O to G, G to I, I to J and again J to T. Okay, so basic concept clear हुआ. What is the hysteresis? Now in the chat box you can write hysteresis is clear. कुछ specific doubt है you can ask. आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखा. इन द नेक्स्ट लेक्चर इसकी व्हाट इज द hysteresis का स्टेप बाय स्टेप. ओके, चलो इमीडिएटली कुछ भी डाउट होगा यूज चैट बॉक्स एंड विल स्टॉप हियर. जस्ट राइट डाउन इन चैट बॉक्स कि hysteresis इज क्लियर. चलो आयुष लिखा है, कृष्ण वसुदेव, वैशाली वसुदेव, परम परम वसुदेव, परम वैशाली, आयुष कृष्ण. बाकी सब कहाँ पे? चलो इमीडिएटली व्यक्ति वसुदेव. चलो और कुछ नहीं डाउट. सो नियर वसुदेव, गुड. वन मोर थिंग कि यस्टरडे मैंने क्वेश्चन बैंक दिया. ओके, यस्टरडे जो कुछ भी ऑफलाइन लेक्चर में थे मैंने 9 to 10 ये लेक्चर दिया था यस्टरडे ऑफलाइन कॉलेज में. मैंने क्वेश्चन बैंक शेयर किया. तो जिनके पास क्वेश्चन बैंक है जस्ट शेयर विद द अदर्स. ओके, तो क्वेश्चन बैंक मैंने शेयर किया सबके साथ. यू कैन टेक दैट क्वेश्चन बैंक फॉर द एग्जाम. देयर इज अ मॉड्यूल 1. एग्जाम में क्या आने वाला है? क्वेश्चन बैंक. उसमें से मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3, ये 2 चैप्टर.
कि मॉड्यूल 2 हमने यूनिट टेस्ट 1 में किया है. So for the unit test 2, module 1, module 3, मैंने क्वेश्चन बैंक भी दिया है, ये के पास नहीं है, just take it from your friend. Yesterday जब क्लास में थे, अपनी वजह से क्लास में कृष्णा था, मेयर, then both तुषार and both brothers, twin brothers, and और कौन था, वेदांत also there, okay, और 2-3 नाम मुझे याद नहीं है. These are the members जो present थे, ओमकार था, just take it from there. तो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया yesterday, module 1, module 3. तो जिसने थ्योरी क्वेश्चन में सब करने एंड सम्स भी करने, ओके, जितने हमने सम्स लिए थे ऑफलाइन लेक्चर्स, तो सम भी थ्योरी प्लस सम्स दोनों में. ठीक, एनीवन इन डाउट? कुछ डाउट है तो पूछो. श्योर, कुछ भी डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में जस्ट राइट योर नेम एंड देन विल स्टॉप. ओके, कुछ भी डाउट होगा तो पूछो, दिस विल स्टॉप. जस्ट राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स एंड देन विल स्टॉप. क्वेश्चन बैंक फॉलो करो, जितने क्वेश्चन दिए नोट से उसका आंसर फाइंड आउट किया करो, एग्जैक्ट आंसर दिए. ओके, जैसे कुछ भी नहीं किया, आपको कुछ पता नहीं चले, एग्जैक्ट आंसर. देन ट्राई टू नोट डाउन दैट आंसर, जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस एंड बोल. राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए. ओके, विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा. चलो, सो जस्ट राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स. तो परमेश देयर, वैशाली, रचित, कृष्णा, कृति और चलो. So we'll stop here. We'll meet in the next lecture. Okay? So this module is over. पूरा part बाकी है. We'll take in the next lecture. Okay? Next lecture will start with a transform. जल्दी हो जाए 2 lecture. Because basic electronics में transfer आपका हो गया. Step up, step down, वो सब हो गया. Okay? It will be just